Hello everyone. As promised, I have brought a Venn diagram practice set today. I did promise yesterday that today we'll be discussing a Venn diagram practice set, 3-set Venn diagram practice set. Okay. Chalo, before I move to the set, if anyone does not know about me, here is a glimpse about me. आप screen pause करके पढ़ लेना इसको, ठीक है? चलो, let's move to the set. Okay, so yesterday I did share this set on many of the social media platforms wherever I am present. Okay, I've also shared this set with my current students. So I'm assuming that all those who are viewing this video or are going to view this video solution, आप सबने ये सेट पहले से ट्राई कर रखा है. If you have not tried the set, please pause the screen over here, try the set, cross check your answers, then move to the solution, right? And in solution, what you will be checking? You should be checking your approach. क्या मेरा approach सही था? क्या मेरा interpretation, जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ था, डाटा प्रोवाइडेड, क्या मेरे डाटा के जो ये इंटरप्रिटेशन थे, जो कंडीशन के इंटरप्रिटेशन थे, सही थे? Were they correct? Those things you have to cross check. Even though if you have got the right answer, sometimes what happen, हमने गलत तरीके से आंसर निकाला, बट कहीं ना किसी तरीके से आंसर तो आ गया, तो हम खुश हो जाते हैं. नहीं, दैट इज रॉन्ग. आज गलत तरीके से आंसर निकल गया, कल उसी तरीके से आंसर निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. So what matters your approach. So when you are cross checking with the video solution, you should cross check your approach. And I will advise कि whenever I post a video solution or a set, please blindly do not go for the solution. आप सीधा solution देखना चालू मत कर देना. Sincere advice, please try it out. Then you cross check the video solution and cross check your approach. ठीक है? चलो. So before we start the discussion, I know many of you will be waiting कि answers क्या है. These are your answers. Check whether you got the correct answers or not. Option C, 225, 45, 85 and 50. कुछ सही आए होंगे, कुछ गलत हुए होंगे. आई थिंक अगर आपके बेसिक वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इफ योर बेसिक वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, देन यू शुड हैव गॉट दीज टू आंसर्स करेक्ट. If your basic Venn diagram concepts are clear, these two answers should have been correct. If these two answers are not correct, that means आपके जो Venn diagram के जो basics हैं वो आपके clear नहीं हुए. ठीक है, तो आपके basics पहले आप clear करो Venn diagram. Okay, yes, question 3, 4, 5 they are bit leveled up, bit tricky, bit leveled up. ठीक है, गलत हुए हैं, no issues at all. अगर गलत हुए, अगर सही हुए, देन वेरी गुड. अगर यू हैव गॉट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करेक्ट, देन वेरी गुड, राइट. बट अगर गलत हुए, नथिंग टू वरी, विल डिस्कस देम. ठीक है, चलो, लेट्स मूव टू द सेट एंड कंप्लीट आवर वेन डायग्राम. ओके, व्हाट वी हैव ओवर हियर, इन अ स्कूल ऑफ 290 स्टूडेंट्स, if a student wishes to can choose one or more electives from among the 3 electives, maths, biology and computers. Now here if you observe, we have a statement, if a student wishes to, right? अगर चाहे तो हाँ, इन तीनों में से वो कोई ना कोई एक या दो या तीन इलेक्टिव सिलेक्ट कर सकता है. So it is not a mandatory. So there may be students, this basically indicates there may be students who may not wish to select any of the electives. नहीं पढ़ना मेरे को ये तीनों, राइट? वैसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं. ठीक है, एंड टोटल वी हैव हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 290 स्टूडेंट्स. चलो, लेट्स गेट आवर वेन डायग्राम. सो दीज आर 3 सेट वेन डायग्राम. लेट्स आई विल टेक हियर दोज हु हैव सिलेक्टेड मैथ्स, दोज हु हैव सिलेक्टेड बायो एंड दोज हु हैव सिलेक्टेड कंप्यूटर्स. ओके, अच्छा, क्या बोल रहे हैं? 35 students have chosen maths and bio. Okay, before I move with the conditions,
let's mark the regions. Region A, region B, region C, region D, region E, region F and region G. अगर ये रीजियंस आपको पता नहीं है क्या है क्या मतलब व्हाट आर दे एंड ऑल, क्यों मार्किंग हो रहा है, प्लीज आप एक बार वेन डायग्राम के बेसिक्स आप क्लियर कर लो. ठीक है, ओके. एंड यस, वी विल आल्सो हैव ए रीजन N. N is what? None. So A, B, C represent those students, or those the region A, B, C represent those students, those who have chosen exactly one elective. D, E, F, those who have chosen exactly 2 electives, and G, those who have chosen all the 3 electives. Right? Okay. So first condition. Total we have 290. Total we have 290. ये अपना पहला condition. Right? Okay. Green? Yes. 35 students have chosen maths and biology. Achha, maths and bio, that means common region, this entire common region, right? So maths and biology, that is D plus G, is given as 35. Okay. 10 students have chosen only biology and computers. Only biology and computers. That means what? Only those 2 subjects. Math nahi aana chahiye, right? So only biology and computers is 10. तो F का वैल्यू यहाँ पे आपका 10 हो गया. Only biology and computers. Those have confusion in these conditions कि सर यहाँ क्यों 10 डाला, यहाँ आपने D plus G क्यों लिया? Again, get your Venn diagram basics clear. Okay. Next condition. 85 students chose only computers. Okay, तो only computers is 85. Fine. 100 students chose bio. देखो only word नहीं है, biology पूरा मतलब chose biology. So the entire biology set will be 100 over here. Okay. 85 students chose maths but not bio. अच्छा, maths चुना लेकिन bio नहीं चुना. That means which region? ये वाले region. Maths चुना लेकिन bio नहीं चुना. So that is A plus E. A plus E. That is 85. Fine. Then what we have? 15 students have chosen all the 3 electives. So here I have 15. Okay. 20 students have chosen only maths and computer. Only maths and computer. Here I will be having 20. Done. Okay. Okay. Now before we move ahead to the next 2 to 3 lines, let's complete the diagram because I do not have any more data, I think. Okay. So now see from this condition, from this equation, D plus G is 35 and G is 15 over here. That implies D has to be 20. Okay. Then from here, A plus E is 85, E is 20. That implies A should be 65. Okay. Now we are remaining with this region, यहाँ का value. We know that this total is how much? 100. Okay. So now 20 plus 15, 35 plus 10, 45. So if I subtract 45 from 100, remaining is 55. Fine. अच्छा, diagram complete हो गया, but I have something called N over here. Total how many students we had? Total 290. Total means what? Addition of the students in all those regions. That is A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus N. This should be equal to 290, right? So I have got all these values. ये सारे values हमें आ चुके हैं already. We have already got these values, right? So let's find out what is the total of these 7 variables A, B, C, D, E, F, G. So now, if you want to do smart calculation, पूरा biology का जो set है, that is 100. हो गया? ये 20 ले लो, 120. Done. 120 यहाँ पे 80 ले लेते हैं, 200 और ये दोनों 5 मिला के हो गया आपका 10, 210, 60, 270. तो A, B, C, D, E, F, G टोटल मिला के 270, which implies N should be how much? 20. That means there are 20 such students. There are 20 such students, those who have not selected any of the electives. Those who have not selected any of the electives. Okay. I hope the diagram is clear. सारे डाटा हमारे आ गए हैं. अच्छा, लास्ट है कुछ 3 लाइन से क्या दिए हुए. No student changes their elective choices unless explicitly mentioned. Okay. तो जब तक बोला ना जाए तब तक कोई स्टूडेंट अपना इलेक्टिव
या फिर जब तक मेंशन ना किया जाए, सो विल नॉट कंसिडर एनी स्टूडेंट चेंजिंग एनी ऑफ द इलेक्टिव्स. ठीक है, ओके. देन व्हाट वी हैव, अ स्टूडेंट कैन लीव एन इलेक्टिव ओनली इफ ही हैड चूजन इट अर्लियर. फॉर एग्जाम्पल, ये जो 55 है, this 55, what they have chosen, which elective they have chosen? They have chosen only biology. So suppose at any point if they want to leave an elective, they can leave only biology, right? क्योंकि बाकी दोनों तो उन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया, लीव कैसे करेंगे? For example, this 20 over here, what they have chosen? They have chosen only math and biology. So in future, if they want to leave any of the electives, they can leave either math or they can leave biology or they can leave both math and biology also. तो जो उन्होंने चूज किया है उनमें से ही वो कुछ छोड़ सकते हैं. कहीं कंडीशन में कुछ दिया अगर कि, और इन एनी क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड दैट दिस मेनी स्टूडेंट्स आर लीविंग दिस इलेक्टिव, दैट मींस वो ऑलरेडी वो इलेक्टिव चूज किए हैं तभी वो लीव कर रहे हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आया किसी कारण की वजह से, राइट? ओके. Similarly, a student can add an elective only if he didn't choose it earlier. तो ये जो 55 है, what all elective they can add in future? They can add maths as an elective. They can also add computers as an elective. तो ये जो 55 है, in future they can add maths or they can add computer or they can add both maths and computer also. क्योंकि उन्होंने पहले math और computer choose नहीं किया था. Okay, so that's what the last 3 lines are talking about. ठीक है, so I hope कि आप सबका वेन डायग्राम की जो वैल्यूज वगैरह, आपका ये डायग्राम आपका सही आया हो. डायग्राम अगर गलत हुआ है, आई होप कहाँ गलत हुआ है, फाइंड आउट दोस मिस्टेक्स, राइट? सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द डायग्राम और एनी ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आई विल बी लीविंग माय लिंक टू द टेलीग्राम चैनल एंड आई विल बी आल्सो लीविंग अ व्हाट्सएप नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. ओके, so the first question, these two questions, these are the 2 easiest questions. The first question is saying how many students of the school chose only maths or bio? Now see here, when you come ahead with or means what? Everything. Maths or bio means what? ये जो maths or bio, again this is the basic part, still I am giving you some brief about it. Sessions में पूरा और and ये सब काफी देर डिस्कशन होता है, but here since it's a solution I'm just giving you small brief. Or means all. So maths or bio means what? Only math भी consider होता है इसमें, only bio भी consider होता है इसमें, math and bio भी consider. तो basically maths bio में जो कुछ भी है सब कुछ, everything. ठीक है, तो what I tell student, or means all. ठीक है, so when I just say maths or biology, maths और biology में ये सब आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, राइट? सो मैथ्स और बायोलॉजी में 65, 20, 55, 20, 15, 10, ये पूरा आपका मैथ्स और बायोलॉजी में आ जाएगा. ठीक है, बट हियर इट इज नॉट मेंशनिंग मैथ्स और बायोलॉजी, इट इज मेंशनिंग ओनली मैथ्स और बायोलॉजी. तो ओनली वर्ड एडेड है. व्हेन यू कम अक्रॉस विद दिस ओनली, मतलब आपका जो थर्ड एंटिटी है उसका कोई भी एलिमेंट यहां नहीं होना चाहिए. तो विच इज द थर्ड एंटिटी? कंप्यूटर इज द थर्ड एंटिटी, राइट? तो कंप्यूटर का कोई भी एलिमेंट यहां नहीं होना चाहिए. मतलब ये जो 20, 15 और 10 ये नहीं होंगे, ये कंसिडर नहीं होंगे. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 65, 20 and 55. दैट टोटल्स अप टू हाउ मच? 65, 70, 70 ये 50, 120, 120 और ये 20, 140. तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 140. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, how many students chose at most one of the 3 electives? What do you mean by at most? At most means maximum. तो बोल रहे हैं मैक्सिमम एक इलेक्टिव चूज किया हो. व्हाट डू यू मीन मैक्सिमम 1? तो इफ एनीवन हैज सिलेक्टेड 1 इलेक्टिव, दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड. इफ एनीवन हैज सिलेक्टेड 0 इलेक्टिव्स, दे विल आल्सो बी कंसीडर्ड. तो व्हेन आई से एट मोस्ट 1 इज द अपर लिमिट. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्टिव सिलेक्ट किया हो तो 1 इलेक्टिव एज वेल एज 0 इलेक्टिव, ऑल ऑफ देम विल बी कंसीडर्ड, राइट? सो 1 इलेक्टिव में कौन कौन है? 65, 55, 85. They have selected 1 elective. And 0 means what? Nothing. So that is 20. Chalo, let's add them up. 65 and 55 gives me how much? 120. 120 ये 20.
कितना हो गया 140, 140 और ये 85 कितना हो गया 225, राइट। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 225, जहां पे आपके ये दोनों कंसिडर होते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस एन, so I'll give you 225. Clear? Still any doubt, any confusion? You have the link, or you can WhatsApp me also. I'll be sharing your WhatsApp number also. We'll see that. ठीक है, चलो let's move on to the third question. ठीक है, अभी थोड़ा आपका इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होगा, कंफ्यूजन चालू होगा, ठीक है, चलो देखते हैं. Okay, what does the question say? Due to some reason, the computer teacher of the school left, because of which all the students who had chosen computers earlier left the elective and chose maths. तो हुआ क्या, those who had selected computer, they left computer and they chose math with no other changes. और कोई changes यहाँ पे नहीं हो, ठीक है. So now how many students would have chosen maths and biology? The question is asking. Okay, so maths and biology means what? This region. Maths and biology means this region, right? So that is D plus G region. The question is talking about D plus G region. तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि कंप्यूटर छोड़ के मैथ्स लिया है ना. चलो एक एक करके देखते हैं. व्हाट विल हैपन विद दिस 85? दिस 85 दे चोज ओनली कंप्यूटर, राइट. ये जो सी के पास जो 85 है, दे चोज ओनली कंप्यूटर अर्लियर. सो नाउ व्हाट हैपेंस, दे लीव कंप्यूटर, राइट, एंड दे चोज मैथ्स. सो व्हाट विल बी दे हैविंग नाउ? दे विल बी हैविंग ओनली मैथ्स, राइट. तो ये जो सी की वैल्यू है, दैट विल मूव टू ए, दैट विल मूव टू रीजन ए. रीजन सी की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो रीजन ए को चले जाएंगे, ओनली मैथ्स को चले जाएंगे. ओके, रीजन एफ देखते हैं. 10. What did they have earlier? Earlier they had only computer and bio, right? But अभी क्या हुआ? They leave computer and they select math. ठीक है, no other changes. मतलब बायो जो पहले था अभी भी है, बस कंप्यूटर हट गया, मैथ ऐड हो गया. That means now they are having only math and bio, only math and bio. So only math and bio they are having. So only math and bio कौन सा रीजन है आपका? रीजन डी है. तो ये जो 10 है यहां शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, ठीक है. लेट्स फोकस ऑन ई 20. पहले कितना क्या था इनके पास? अर्लियर दे हैड मैथ एंड कंप्यूटर. तो उन्होंने कंप्यूटर तो छोड़ दिया. अभी मैथ तो दे ऑलरेडी हैव इट, so they need not select again math. It is clearly given. A student can add an elective only if he didn't choose it earlier. तो earlier they were having maths, तो ठीक है, they will remain only in math. तो ये 20 भी कुछ रीजन में चले जाएगा, ये 20 भी आप देखो कंप्यूटर हट गया और कोई चेंजेस होगा नहीं, राइट. सो नाउ दिस 20 विल बी आल्सो मूविंग टू ओनली मैथ रीजन. दिस 20 विल आल्सो बी मूविंग टू ओनली मैथ रीजन. ठीक है, तो ये 20 भी आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा. ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं. बाकी बचा जी. ठीक है, जी के साथ क्या होगा, लेट्स सी. तो व्हाट इज हैपनिंग कि जी में ये जो 15 थे, दे चोज ऑल द 3 electives. दे चोज मैथ, दे चोज बायो, दे ऑल्सो चोज कंप्यूटर. सो दे लीव कंप्यूटर, बट मैथ तो ऑलरेडी था उनके पास, so they are not going to choose again math, right? So what will be the scenario for these 15? Math and bio, only math and bio. तो only math and bio is which region? Region D. तो ये भी आपका region D में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ultimately what is the question asking? The question is asking about D plus G. G में तो कोई रहेगा नहीं. G is what representing all the 3 subjects. तो ऑल द 3 होगा नहीं क्योंकि कंप्यूटर तो है नहीं वैसे भी आपके पास, राइट. तो दिस बिकम्स 0, दिस ऑल्सो बिकम्स 0, ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपके 0 हो गए, राइट. सो दिस हियर आई हैव एडिशन ऑफ 20, आई हैव एडिशन ऑफ 85. अच्छा, डी में क्या हो गया? आई हैव एडिशन ऑफ 10 एंड आई ऑल्सो हैव एडिशन ऑफ 15. ठीक है, सो दैट्स इट.
बाकी कंप्यूटर के अंदर जो भी है वो सारे रीजन्स क्या हो गए, जीरो हो गए, बिकॉज पीपल हैव लेफ्ट. गॉट इट. सो क्वेश्चन इज आस्किंग डी प्लस जी. जी तो आपका जीरो हो गया, बट डी का वैल्यू क्या हो गया? डी का वैल्यू जो है पहले 20 था, 10 और ऐड हो गया. कौन से रीजन से? एफ रीजन से. 15 और ऐड हो गया. कौन से रीजन से? जी रीजन से. तो सी है जी रीजन ओनली मैथ एंड बायो, दे गॉट एडेड टू डी. एफ रीजन ओनली मैथ एंड बायो, दे ऑल्सो गॉट एडेड टू डी. तो डी की जो वैल्यू है वो अभी कितना हो गया? 20 प्लस 10 प्लस 15, दैट इज 45. आई होप इट्स क्लियर, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल सब कुछ. ठीक है? स्टिल एनी कंफ्यूजन? यू आर ओपन फॉर डाउट्स? आई एम ओपन फॉर डाउट्स. ठीक है? सो द आंसर विल बी 45. चलो, let's move on to the next question. Okay, in the next question what it says, due to some reason 30 students who earlier chose biology as an elective did not like the subject as so they left that elective. ठीक है, तो 30 ऐसे बंदे हैं जो पहले बायो सिलेक्ट किए थे इलेक्टिव के हिसाब से, राइट, बट उनको बायो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या हुआ? बायो छोड़ दिया. दे लेफ्ट बायो, राइट, विथ नो अदर चेंजेस. नाउ जस्ट लास्ट नाइट व्हेन आई सेड दिस क्वेश्चन, ये जो नो अदर चेंजेस इस क्वेश्चन में, ये लिखना मैं भूल गया था. ठीक है? सो इफ एनी ऑफ यू हैड डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. ठीक है? सो विथ नो अदर चेंजेस मतलब और कोई चेंजेस नहीं है पूरे सिनेरियो में. द ओनली चेंजेस 30 bio students left the elective. ठीक है? बट 30 कौन से रीजन से जाएंगे? दैट आई डू नॉट नो. 30 में भी फ्रॉम दिस रीजन, 30 में और यहां से कुछ हो सकते हैं, और यहां से कुछ हो सकते हैं, यहां से भी कुछ हो सकते हैं. तो एग्जैक्टली ये जो 30 स्टूडेंट्स है कौन से रीजन से जा रहे हैं, फ्रॉम विच रीजन, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू अस. ठीक है? ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? इन दिस सिनेरियो व्हाट कुड बी the maximum number of students who would have chosen only maths as their elective. तो बेसिकली क्या बोल रहा है? ओनली मैथ्स को आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. यू हैव टू मैक्सिमाइज ओनली मैथ और द रीजन ए. नाउ लेट्स ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, राइट, व्हाट हैपेंस if I consider these 30 students from different regions of bio, because bio has total 4 regions over here. तो कहां से स्टूडेंट्स अगर निकलेंगे, कहां जाएंगे, दैट वी विल चेक. नाउ इफ ए स्टूडेंट इज फ्रॉम दिस रीजन एंड जस्ट लीव्स बायो बिकॉज इट इज गिवन नो अदर चेंजेस, सिर्फ उसने बायो छोड़ा, राइट. तो इफ दोस 30 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हियर, सो वेयर विल दे गो? सो दे हैड ओनली बायो. बी का सिनेरियो क्या है? दे हैड ओनली बायो, राइट. So if they leave that subject, where will they go? Nothing, या फिर none पे चले जाएंगे. None means what? N. तो अगर यहां से कोई बायो छोड़ता है तो सीधा N को शिफ्ट हो जाएगा. ओके, चलो, लेट्स ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस विथ D. D is having maths, bio, only maths and bio, right? तो उसमें वो अगर बायो छोड़ता है तो क्या होगा D का सिनेरियो? दो स्टूडेंट्स विल बी मूविंग टू ओनली मैथ. सिर्फ मैथ बचेगा उनके पास. मैथ एंड बायो था, तो बायो उन्होंने छोड़ दिया. सो व्हाट विल रिमेन विद देम? ओनली मैथ. तो ओनली मैथ मींस विच रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट? ए. तो अगर डी से कोई बंदा निकला कि नहीं मैंने बायो छोड़ दिया, ठीक है, तो कहां शिफ्ट हो जाएगा? वही तो शिफ्ट हो जाएगा. फाइन, चलो. इफ समवन फ्रॉम जी पे पहले क्या था? जी पे मैथ्स, बायो एज वेल एज कंप्यूटर, तो ये तीनों थे उनके पास. So what happens if anyone leaves bio? So what will they remain with? They will remain with maths and computer. तो only maths and computer shift हो जाएंगे. तो if someone from here leaves bio, that person will shift to E. That person will shift to E. Only maths and computer, right? Only maths and computer. That is region E. यहाँ shift हो जाएंगे. Fine. Next region F. F पे क्या था? बायो एंड कंप्यूटर.
ओनली बायो एंड कंप्यूटर, तो ओनली बायो एंड कंप्यूटर था, बायो उन्होंने छोड़ दिया, तो एफ इफ एनीवन फ्रॉम एफ लिव्स बायो, तो ही विल बी शिफ्टिंग टू विच रीजन, ही और सी विल बी शिफ्टिंग टू ओनली कंप्यूटर रीजन। तो ओनली कंप्यूटर रीजन मतलब कौन सा रीजन है, सी रीजन। हमें क्वेश्चन क्या बोला है, हमें क्वेश्चन बोला है ए को मैक्सिमाइज करना है। सो कैन आई सी अ सिनेरियो वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम वन ऑफ दीज रीजन्स शिफ्टिंग टू रीजन ए सो दैट रीजन ए का वैल्यू इंक्रीज हो जाए? यस, विच इज दैट सिनेरियो? सिनेरियो हियर, if I consider that students from D they leave bio, students from D they leave bio, then yes मेरा only math का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि students from D if they leave bio they will be moving to the only math region, right? So if I have to go for A max, A पे पहले कितने थे, 65, okay, now how many students are going to leave bio? 30 students. How many students? 30 students are going to leave bio, right? But D पे तो सिर्फ 20 ही है, बाकी 10 किसी भी रीजन से हो, can they affect the value of A? No, they cannot affect the value of A. Only D's value can affect the value of A. ठीक है, तो मुझे अगर A को मैक्सिमाइज करना है, मैं D से ही वैल्यू A को शिफ्ट कर सकता हूं और बाकी किसी रीजन से शिफ्ट नहीं कर सकता। Yes, the scenario is given कि 30 students are leaving bio, but my answer or the question जो भी पूछा यहाँ पे, that will be affected by only how much, but by only 20. Reason, D में सिर्फ 20 students थे, D is having only 20 students. Remaining 10 students may be from this region, maybe from this region, maybe from this region, but those students will not affect the value of A. तो A का जो वैल्यू है ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स वी कैन हैव 65 प्लस 20, दैट इज 85. तो A's वैल्यू और ओनली मैथ का जो सिनेरियो है, मैक्स टू मैक्स 85 हो सकता है, दैट इज ऑप्शन ए ओवर हियर. Still any confusion, still any doubt? Repeat this video once again. ये वाला पार्ट वापस से पढ़ देखो एक बार, 2-3 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. Yes, it is bit confusing. ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो, फिर भी कुछ दिक्कत हो, दिया है मैंने टेलीग्राम, यू हैव द टेलीग्राम लिंक, यू हैव द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. ओके, so I hope all of you are enjoying. ठीक है, okay, so the last question, what it says, later, ठीक है, मतलब sometimes later the school allows the students to change their electives. Okay, fine. Where it was observed that each of them either left exactly one elective or added exactly one elective but not both. That means what? Either they leave one elective, एक elective उन्होंने छोड़ा, or they add exactly one elective. लेकिन both leaving and adding, leaving one elective and adding one elective, ये नहीं हो सकता है. So basically they can do any one activity, they can do any one activity from among these two, leave one or add one. ये दोनों में से कोई एक एक्टिविटी, only one activity, they can do only one activity, right? So it was observed कि this thing happened. So the students either they left one elective or they added exactly one elective, but we did not have any student those who left as well as added. ठीक है, and they cannot leave more than one elective, they are leaving exactly one elective as well as they are adding exactly one elective. So no one has left more than one elective, no one has added more than one elective. And if you observe, it is clearly given each of them. That means what? Every individual did one of these activities, every individual did one of these activities. इधर उन्होंने एक इलेक्टिव छोड़ा है या फिर एक इलेक्टिव ऐड किया है. अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आफ्टर द चेंज ऑफ इलेक्टिव्स, मैक्सिमम हाउ मेनी स्टूडेंट्स could have chosen
ओनली बायो। तो ये वाला जो रीजन है, ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, ये जो बी जो है आपका मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है पूछा जा रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ बी। ऑब्जर्व बी। नाउ बी के पास ये जो 55 है, दिस 55, डेफिनेटली दे विल ऑल्सो बी लीविंग one elective or adding one elective. They cannot stay idle and stay at in the B region. B region में वो रह तो नहीं सकते हैं, क्योंकि every individual is going through one of the activities. तो either वो एक एक्टिविटी छोड़ेंगे या फिर एक एक्टिविटी ऐड करेंगे। Got it? So what will happen? ये जो 55, if they leave one activity, क्या छोड़ेंगे? बायो छोड़ेंगे, right? They will leave bio. They will leave bio because they do not have any other electives. So if they leave bio, they will shift to which region? They will shift to N region. None हो जाएगा. They will shift to N region if they leave bio, right? But if they add elective, what they can add? They can add math. So if they add math, they will move to D. Or if they add क्या बोलते हैं, computer, right? They will move to F. तो can I say B के ये जो 55 हैं, definitely they cannot stay in B region. Either they will shift to N, or they will shift to D, or they will shift to F. तो नहीं रहने वाला है, that is for sure, right? Okay. Now the way we observed कि how are these 55 going to make a movement, सिमिलरली हमने देखा कि बी से कहां कहां वैल्यू जा सकता है। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व बी से कहां कहां से वैल्यू आ सकता है, बिकॉज दैट वी हैव टू डू ना, वी हैव टू मैक्सिमाइज बी, वी हैव टू मैक्सिमाइज बी। नाउ बिफोर यू सी द सॉल्यूशन, प्लीज पॉज एंड थिंक, बी को कहां कहां से वैल्यू आ सकता है, कहां कहां से वैल्यू आ सकता है? डी से आ सकता है। कैसे? सो यू कैन गेट वैल्यूज फ्रॉम डी रीजन if they leave maths, if they leave maths, ठीक है। और कहां से आ सकता है? F से आ सकता है। You can get value from F also. If they leave computer, और कहां से आ सकता है? N से भी आ सकता है। कैसे? If they add bio, ठीक है। तो D से कितने आ सकते हैं? 20, F से कितने आ सकते हैं? 10, N से कितने आ सकते हैं? 20. Is there any other region which can contribute to bio? No. फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। Some of you might be thinking, सर ये जो 15 जी के, अच्छा जी के 15 अगर यहां शिफ्ट होने हैं तो इनको मैथ्स भी छोड़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी छोड़ना पड़ेगा, राइट? दे हैव टू लीव हाउ मेनी सब्जेक्ट? दे हैव टू लीव 2 सब्जेक्ट, बट द कंडीशन सेज दे कैन लीव ओनली 1 सब्जेक्ट, राइट? ठीक है, 65 से हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं, उनको मैथ छोड़ना पड़ेगा और बायो लेना पड़ेगा, राइट? दे हैव टू लीव 1 सब्जेक्ट एज वेल एज दे हैव टू ऐड 1 सब्जेक्ट, दैट इज नॉट अलाउड। सिमिलरली हियर दे हैव टू लीव कंप्यूटर एंड दे हैव टू ऐड बायो, दैट इज नॉट अलाउड। और अगर इन 20 की बात करें, इनको 2 सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, मैथ्स कंप्यूटर छोड़ना पड़ेगा और बायो लेना पड़ेगा, विच इज डेफिनेटली नॉट अलाउड, राइट? सो बाकी कोई भी रीजन से वैल्यू बी को कंट्रीब्यूट या फिर बी को वैल्यू नहीं जा सकता। These are the only 3 regions, that is D, F and N, which can contribute value to B. So what will be the maximum value of B? B का जो maximum to possible value होगा 20 plus 10 plus 20, that is 50. Now some of you might be thinking, sir ये जो 55 था हमने डिस्कस किया ना, this 55 is not going to stay with B, this 55 is not going to stay with B. Okay, so B's max to max possible value will be 50, that is your answer. ठीक है, I hope I gave my best in explaining it. Still any doubt, confusion, definitely you can let me know through the contact. Okay, so yes, take care. Now before I close, I'll just information, so I'll be yes, बीच में मैं क्या बोलते हैं, practice sets, I'll be posting practice sets. So if you have not yet subscribed to the channel, please subscribe to the channel and turn on the notification, so that if I post a set to the channel,
then you will get it beforehand and you can practice and come for the video solution. ठीक है, चलो, take care, have a good day.